See, Monday motivation. Lessons from past weekend and today. It is today's post of mine, okay? Hanuman Jayanti, April 12. Be resilient. Hanuman crossed the ocean to find Sita, not because it was easy, but because he had purpose. Challenges didn't stop him. His devotion kept him going. Motivation for you and me. Life will throw obstacles your way, but like Hanuman, stay focused. Your resilience can move mountains. April 13, it was Palm Sunday as well. Lead with humility. Jesus entered Jerusalem on a humble donkey, showing that the world showing the world that true leadership isn't about power, it is about serving others with compassion. गणेश जी की सवारी क्या है? माउस माउस हाँ, तो कितने बड़े गणेश जी और उनकी सवारी क्या है? माउस, है ना? ह्यूमिलिटी देखिए. वैसे ही जीसस एंटर्ड जेरूसलम ऑन अ डोंकी. मीन्स मोटिवेशन क्या है हमारे लिए? वेदर एट वर्क और इन लाइफ, लीड विथ काइंडनेस. हम्बल लीडर्स इंस्पायर ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट. बैसाखी था कल, 13th of April. स्टैंड अप फॉर जस्टिस. एक्चुअली ये जलियांवाला बाग का ही बैसाखी, जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी. ओके, ऑन दिस डे in 1699, 5 brave men sacrificed their lives for justice and equality. Guru Gobind Singh created the Khalsa Panth to teach us courage and unity. So what is the motivation for you and me? When something feels wrong, speak up, stand firm in your values. Together we can create a fairer world. The next occasion is Jallianwala Bagh massacre. Value freedom. The tragic events of 1919 remind us of the sacrifices made for India's freedom. People fought for liberty so we could live without fear. Motivation for you and me. Freedom is very precious. Use your voice, your skills and opportunities wisely. Build a future where everyone feels free and valued. Ambedkar Jayanti, April 14th. Fight for equality. Dr. B.R. Ambedkar spent his life fighting against discrimination and building a constitution that protects everyone's rights. He inspires us to create spaces where equality thrives. Motivation क्या है हमारे और आपके लिए? Equality starts with small actions. Include others. Lift people up. Celebrate diversity. It makes us stronger. इसका मैं फॉर्मेटिंग करना भूल गई हूँ, लेकिन अभी आपके सामने कर लूंगी. न्यू ईयर फॉर केरला एंड तमिलनाडु. Keralites wake up to Vishu Kani, blessings of light, prosperity, and the bright yellow Kani Kona, Karni flowers. Tamilians welcome Puthandu with clean homes, sweet neem jaggery dishes, and hope. Motivation for you and me. Both are about gratitude, family, and starting fresh with love. Let stories inspire. Be resilient like Hanuman. Lead with humility like Christ. Stand for justice like the Khalsa, value freedom like the Jallianwala Bagh martyrs, fight for equality like Ambedkar. This is the Monday motivation post. इस दुनिया में मोटिवेशन की हर वक्त जरूरत है, इसीलिए आपको मंडे मोटिवेशन देने के लिए ये पोस्ट बनाया है मैंने. और मोटिवेशनल पोस्ट एक्चुअली वर्क फॉर यू पर्सनली एंड ऑन सोशल मीडिया एज वेल. हैशटैग मंडे मोटिवेशन, हैशटैग अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती, पाम संडे, बैसाखी, जालियांवाला बाग, इंस्पिरेशन, लीडरशिप लेसन, जर्नलिंग विथ रानी. ओके, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो तुमने फॉर्मेटिंग में गड़बड़ की है उसको ठीक कैसे करोगी. ओके, मैं अभी ठीक करती हूँ. मैंने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया है एंड लेट मी शो यू हाउ. दिस इज मोनिका क्रोम एक्सटेंशन. ठीक है, सो मोनिका हमने डाउनलोड कर लिया है. मोनिका की भी मदद से कर सकते हैं, या एक बहुत ही इजी और वे है कि हम लोग लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेटर, एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं. मैं अभी लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेटर यूज करूंगी क्योंकि मेरे जो ऊपर के पोस्ट है ना, टेक्स्ट जो है पोस्ट का, वो उसी से फॉर्मेट किया हुआ है, तो गड़बड़ ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसी को यूज करेंगे, लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर. ये आप देख रहे हैं, एडिट पोस्ट में जाएंगे, ये वाला है ना, न्यू ईयर फॉर केरला एंड तमिलनाडु.
इसको मुझे बोल्ड करना है, लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर में गई, ये बोल्ड हो गया, दिख रहा है? दिस इज ओनली फॉर लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेटिंग. ओके, दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेशली डिजाइंड फॉर पुटिंग योर टेक्स्ट फ्रॉम लिंक्डइन एंड फॉर्मेटिंग इट. ओके, अब देखो बराबर हो गया. मोटिवेशन फॉर यू एंड मी वाज रिटन इन इटैलिक्स बिफोर, राइट? सो अब इसको फिर से इटैलिक्स कर देंगे. ठीक है, ये इटैलिक्स वाले को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ओके, अब यहाँ पर मैंने सूरज भगवान सूरज का सिंबल डाला है, तो यहाँ पर भी सूरज का सिंबल डाल देंगे ताकि सब इवन लगे, राइट? दिख रहा है? ओ माय गॉड, ये बोल रहा है कि आपका पोस्ट का वर्ड्स एक्सीड हो गया. लेट मी ओके, हाँ अभी ठीक है. अभी देखिए, इज इट लुकिंग नाइस फॉर्मेटिंग वाइज? ओके, एंड आप लोगों को एक सलाह देती हूँ. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, बिकॉज यू आर building your social media presence on various platforms. As soon as you post this kind of content on LinkedIn, just go to YouTube and post it as a community post as well. आपको लगता है YouTube पे सिर्फ वीडियोस डालते हैं और आप भूल जाते हैं कि पोस्ट डालने का भी ऑप्शन है. दिख रहा है? जब मैंने YouTube चैनल अपना खोला तो यहाँ पर होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट लिखा है ना. पोस्ट, इसको कम्युनिटी पोस्ट कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक काम करूंगी, इमेज निकालूंगी, अपना इमेज डालूंगी, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर. यही वाला इमेज है ना मेरा, सुंदर सी मैं स्टेज पे, यही वाला इमेज लगाया ना वहां पे? Yes, yes. ऑडियंस जी बोलिए. Yes, 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 Shubhra. Actually, I saw your post on YouTube. I was asking to you how you did this. ओके ओके, अच्छा इसमें कंटेंट कहाँ गया? अरे कंटेंट वाला कहाँ? कंटेंट यहाँ देख रहे हैं, कर्सर निकाले, दिख रहा है? पूरा का पूरा मैंने लिंक्डइन वाला कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया. थोड़ी फॉर्मेटिंग यहाँ भी कर लेंगे भाई, स्पेसिंग की. ठीक है, आप लोग YouTube पे भी पोस्ट करना ना भूलें. जो चीज लिंक्डइन पे डालते हैं उसी को पोस्ट फॉर्मेट में YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में डालिए. इट विल बी बूस्टिंग योर YouTube एज वेल, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं. लोग आपको हर रूप में देखना चाहते हैं, वीडियो के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में. आप कैसे क्या बात कर रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स. बिल्डिंग योर पर्सनालिटी, ओके, एंड गेटिंग पीपल टू लाइक यू. गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? हो गई सुंदर सी फॉर्मेटिंग? हो गई. अब इसको कर देंगे पोस्ट. अभी ये देखिए व्यू दिख रहा है मेरा. YouTube पे भी पोस्ट आ गया, लोगों को नोटिफिकेशंस में ये भी जाएगा. कहने का मतलब है जितने तरीके का कंटेंट जितनी बार पोस्ट करेंगे, इट विल बूस्ट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट्स. ओके, so I will give you this piece of advice. Whatever you post on LinkedIn, please go and post it as in the community post tab of your YouTube channel as well. Got my point? Okay, Ravinder, can you just do it in front of them by using a Chrome extension called Beautify Post or whatever Chrome extension you use? Are you using Clio or Beautify Post? I just go on Google and type it, like make the bold LinkedIn post like that. Okay. So for everybody out here, if you want to beautify your LinkedIn post, let this be learning today. Okay. Can you see this post of mine in which I have highlighted things in bold? Everybody can see, right? Hello, everybody. Yeah. And I have italicized this motivation for you and me. Can you see this? Right? Yeah. If you want this kind of formatting, there are two ways. Either you can choose a platform called LinkedIn Post Formatter, LinkedIn Text Formatter, and whatever you paste it here, it will make it bold, it will make italic, bold italics, script, bold script, double underline. But I will recommend you bold or italics or max to max bold italics. Okay.
For PS writing means post script writing. This, for example, I don't have many bandwidth. I don't have much bandwidth of words and characters here. But if I had that kind of liberty, I would have I would have done. मैं क्या करती ना, अगर मेरे पास और भी कैरेक्टर्स के लिमिट होते, यहाँ पर अभी लिमिट नहीं है क्योंकि 2000 समथिंग कैरेक्टर्स ही होता है, आप लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन में उससे ऊपर नहीं डाल सकते। तो मैं क्या करती, ये वाला जो कंटेंट है ये एक तरह से पीएस है। क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट, पीएस। तो मैं क्या करती, इसको कंट्रोल सी करती, लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर पे जाती, आई वुड हैव पेस्टेड इट हियर एंड बोल्ड इटैलिक्स, ये दिख रहा है ना बोल्ड इटैलिक्स, बोल्ड इटैलिक्स वाला कंट्रोल सी करती, यहाँ पर पेस्ट करती। ठीक है, अभी दिख रहा है, ये सुंदर लग रहा है। बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड आस्किंग द ऑडियंस टू recap things like this, what is the motto of my post? To recap, okay, let stories inspire you, be resilient like Hanuman, lead with humility like Christ. It could be in bold italics, right? ये bold italics में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, right? But आप देख रहे हो ना, यहाँ पर LinkedIn ने बोल दिया you have exceeded the maximum character limit, so I'm not going to do this. Okay, ये हुआ एक मेथड, और मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड बता रही हूँ। देयर इज अ क्रोम एक्सटेंशन कॉल्ड ब्यूटीफाई पोस्ट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस ब्यूटीफाई पोस्ट क्रोम एक्सटेंशन? Yes. This is meant for formatting of LinkedIn posts. Okay, so you have to add it to your Chrome. Okay, आपने इसको अपने Chrome ब्राउजर में as an extension add कर दिया. Just be patient for few seconds. My internet is taking a bit longer. Okay, I think it's taking way too longer. Let me show you in my another browser where Beautify Post has already been installed. Beautify Post extension. So this is another browser of mine. Okay, I have not. Oh, sorry. इस पे नहीं किया मैंने. It's taking way longer. Ravinder, I'm giving you this link of Beautify Post Chrome extension. Can you please show them by writing something on your LinkedIn post and then beautify and italicize and something like that? It's taking way too longer for me. Right. My laptop needs urgent digital junk removal. I have so much of digital things on my laptop, on my browsers. They are not working right now correctly. They are taking way longer. No worries, Ravinder will tell you. So going forward, what have you learned today up till now? Whenever you do a LinkedIn post, please post it on YouTube in the community post tab as well. Lesson number 2. While doing the LinkedIn post, please do formatting because it beautifies it. Okay, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इमोजी जोड़ना है, वो जोड़िए, अच्छा लगता है, लेकिन डोंट ओवरडू इट. ओके, इंस्टाग्राम नहीं है कि हर वर्ड पे इमोजी लगा दें. ओके, Okay, here it is. Bold italics. ओके. सो द थिंग इज, जब आप क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना, ब्यूटीफाई पोस्ट क्रोम एक्सटेंशन, तो अपने आप आपको सामने सामने ही दिखा देता है कि ओके आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं. दिख रहा है दोस्तों? Yeah. Thank you so much. इस क्रोम एक्सटेंशन का नाम क्या है? एक साथ बोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1. व्हाट इज द नेम ऑफ द Beautify Post. Beautify Post Chrome extension. Beautify Post ब्यूटीफाई पोस्ट क्रोम एक्सटेंशन. Chrome Yes. extension. समझ में आ गया? So I think we are close to our session. Thank you so much.